हेलो एवरीवन। अब अपन लीगल मैटर की क्लास को शुरू करते हैं। जनरल मैटर की क्लास आई होप आप लोगों ने लिखी होगी। हमारा विकसित भारत के ऊपर ये ऊपर ही है, इसके अंदर मैटर। ये मैं पीडीएफ जो शेयर करूँगा वो एक ही पीडीएफ में आपको दोनों मैटर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अलग अलग आएगी। एक ही पीडीएफ है। डेट के हिसाब से आज जैसे 16 है तो 16 के हिसाब से 16 Feb 2025 की पीडीएफ आपको मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करोगे, उसमें ही आपको दोनों मैटर्स जो है वो मिल जाएंगे। और साथ में जो आउटलाइन होगी वो मैं आप लोगों को अलग से भेज दूंगा, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। विकसित भारत का मैटर जो अपन ने लिखा था, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको ट्रांसक्रिप्शन बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने वो जो है ट्रांसक्रिप्शन किया था। 10 फैब को वो मैंने मैटर लिखवाया था। उसमें आप देखोगे तो एक्यूरेसी आप देखो, लोगों की 98% तक एक्यूरेसी उसके अंदर आ रखी है। और इसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया है। टॉप 10 तो हमेशा 90 प्लस ही रहते हैं। बाकी और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अपने हिसाब से लिखते हैं। फिलहाल अपन लीगल मैटर की क्लास में है तो अपन लीगल मैटर लिखते हैं अभी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर ये मैटर जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। इसकी स्पीड भी अपन 100 के आसपास रखेंगे और इसमें भी मैं फुल स्टॉप जो है वो नहीं बोलूँगा, ठीक है। आपके सुप्रीम कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फुल स्टॉप नहीं बोलेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फुल स्टॉप बोलेंगे। तो जो फुल स्टॉप वाला मैटर था वो मैं कल लिखवा चुका हूँ और आज बिना फुल स्टॉप के अपन लिखेंगे। तो दोनों प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहे, उस हिसाब से मैं आपको मैटर जो है वो लिखवाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 710 वर्ड्स हैं तो 7 मिनट का कुछ आसपास का मैटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो जाओ। गेट रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। Mr. Kailash Vasudev, learned senior counsel, has submitted that the division bench has not appreciated the contentions of the VPT against the order of the learned single judge. According to him, it was specifically argued that undeniably it is not mandatory for any organization to accept every application that is received from the employees seeking voluntary retirement, and that the VPT was authorized to take a decision on 23/8/2000 to consider applications of only those employees who have not crossed 58 years of age. It is further submitted that the learned single judge and of the division bench of the High Court have failed to appreciate that the scheme clearly stipulates a basic condition that voluntary retirement under a scheme cannot be sought for as a matter of right. Para. The factual position with regard to the other employees whose cases for voluntary retirement were considered had been placed by filing a counter affidavit but has been overlooked by the High Court. Learned senior counsel further submits that the High Court has erred in directing that even though the writ petitioners had continued in service beyond 58 years till their superannuation and had received salary, they would not be required to refund the excess amount received, and that they shall be extended benefits under the VRS as on the date of their applications. It is further urged that a person who has crossed the age of 58 years is not eligible to be considered
for retirement under the VRS. Respondent number 2 had in fact completed the age of 58 years by 23/9/1999. Therefore, learned senior counsel would submit that the orders of the learned single judge as well as the division bench are arbitrary and have been passed without taking into consideration these vital facts. Para. Learned senior counsel appearing for the respondents submitted that the port trust has no discretion to refuse the offer to go on retirement under the voluntary retirement scheme except in cases of the exigencies of service or the compelling necessity or the indispensability of the employees concerned. The port trust, having accepted the offer of similarly placed employees who have also completed 57 years of age and also 58 years of age to go on a voluntary basis, declining to permit the respondents to retire on a voluntary retirement basis, is clearly discriminatory. The port trust has committed illegality in not passing any orders on the application dated 13/9/2000 to retire from its service on a voluntary retirement basis, though the application has been forwarded for acceptance by the head of the department. It is therefore contended that the port trust has not acted fairly and justly in the case of respondent. Para. We have carefully considered the rival submissions made by the respective parties. We have also perused the pleadings, judgments delivered by the learned single judge and the division bench. In our opinion, the chairman of the port trust has an absolute right either to accept or not to accept the applications filed by the employees for retirement under the voluntary retirement scheme. We have already reproduced the entire scheme dated 29/8/1991 of the Government of India. The Government of India has decided that Port Trust and Dock Labour Board can introduce voluntary retirement schemes with a view to reducing surplus manpower subject to the terms and conditions set out in the voluntary retirement scheme. Para. The High Court, in our opinion, could not entertain the grievance of the respondents even on their own showing. It was based merely on a presumption that applications for VRS, if filed before April 2000, would be considered by July 2000, when no such circular or letter had been issued by the Port Trust. The scheme also provides that the Port Trust and Dock Labour Board will have a right not to grant voluntary retirement for the reasons recorded in writing. In our opinion, the chairman is competent to frame the scheme having regard to the exigencies of work, and no one can claim voluntary retirement as of right. The learned judges of the High Court have also not seen that the respondent's application for voluntary retirement cannot be considered in view of the seniority of service of the employees concerned. Stop.
हाँ जी, तो ये आपका लीगल मैटर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 710 वर्ड से स्पीड 95 या 96 की थी। इसमें एक चीज़ छोटी सी आप समझ लो, लर्नेड सिंगल जज वर्ड इसके अंदर काफ़ी बार आया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि लर्नेड वर्ड भी कैपिटल आएगा, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंगल जज जो वर्ड है वो कैपिटल आएगा, लर्नेड वर्ड को कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी सब आप मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। डिवीजन बेंच कैपिटल लिखा जाता है हमेशा, और बाकी सब सिंपल है। ठीक है, चलिए ये क्लास ख़त्म करते हैं। मैं अभी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा आउटलाइंस भी भेज दूंगा, वो भी चेक कर लेना। और कोई डाउट हो तो वीडियो अगर बाद में देख रहे हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मैं आपके क्लियर कर दूंगा सारे डाउट्स। चलिए, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।